Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Iskam BBT founder Jaya Srila Prabhupada ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Glory to Srila Prabhupada. Hare Krishna. और प्रभु जी से कहते हुए श्रील प्रभुपाद से पहली बार मिले थे और उसके बाद से प्रभु जी इस्कॉन संस्था में more than 50 years प्रभु जी ने 2.5 वर्षों तक श्रील प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट के रूप में सेवा की है। प्रभुपाद जी के साथ पूरे संसार में अलग अलग स्थानों पे रहते थे और श्रील प्रभुपाद के साथ ही रहते थे। बिल्कुल नेक्स्ट कमरा होता था प्रभु जी का। सो हम बहुत सौभाग्यशाली है हमारे बीच में प्रभु जी आए हैं और प्रभु जी का स्वागत करेंगे। एक बार लॉन्ग शक्ति हरे कृष्ण मानो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर सकते हैं और हम ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। Hare Krishna. So I have a question. Yes. How many brahmacharis are in this temple? इस मंदिर में around 20 brahmacharis, 20 brahmacharis. Right now we have 1, 2, 3, and then 4, 5, 6, 7, 8, 9. And there are some more preaching there in other places. Other places. Yes, 3-4 went for Sankirtan good distribution in Ahmedabad. Okay. Very nice. Thank you. So, well, today we were going to continue with Holy Name from class. आज हम फिर दोबारा से कल की तरह आगे बढ़ेंगे हरिनाम पर चर्चा करेंगे। But I really want to talk to you all about Srila Prabhupada. मैं प्रमुख रूप से आपसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करूँगा। Since at this time, 2022, not so many people that have been with Srila Prabhupada 2.5 years. I was with Srila Prabhupada as a servant. कि 2022 में इतने लोग नहीं हैं मौजूद हरिनाम पे जिन्होंने 2.5 वर्षों तक श्रील प्रभुपाद के सेवक के रूप में सेवा की। I see, put this very nice photo up there of Srila Prabhupada. This is a Bhaktivedanta manor. और ये लंदन में भक्तिवेदांत मैनर की फोटो है प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के साथ बैठे हैं। And of course, next to him, there's this young boy. He's reading the very first volume of Chaitanya Charitamrita. और ये जो प्रभुपाद के साथ नवयुवक बैठे हैं, ये चैतन्य चरितामृत का पहला खंड पढ़ रहे हैं। And this was before even the hardbound Adi Leela, the first volume, came out. और ये उससे भी पहले की बात है जब चैतन्य चरितामृत का मोटे गत्ते वाला किताब था उससे पहले की बात है। So that book was called Lord Chaitanya in 5 Features. और इस बुक का नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु 5 रूपों में। So of course, as soon as a book had been put into print, they would send it to Srila Prabhupada wherever he was in the world. They would send by airmail immediately so Srila Prabhupada could see this book. जैसे किताब प्रिंट होकर आती थी तो जो शिष्य होते थे वो एयरमेल से हवाई डाक से प्रभुपाद के पास भेज देते थे जहाँ पर श्रील प्रभुपाद होते थे। You'll see many pictures of Srila Prabhupada receiving first copy of a book, holding to his head. Always so very happy when he saw one of his books had been in print. और श्रील प्रभुपाद बहुत खुश होते थे अपनी किताबों को देख के जब भी हमने कई सारे चित्र देखे होंगे प्रभुपाद के जिसमें वो किताब को रिसीव करके अपने माथे से लगा रहे। And of course, the person reading that book, the young boy, that was me. और जो ये नवयुवक ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो ऑफ कोर्स प्रभु जी हैं। So at that time, this was in September 1973. और ये सितंबर 1973 की फोटो है। And if you look at the cloth, you'll see I was also brahmachari at that time. That was a very long time ago.
और ये बहुत पुरानी बात है 49 years ago. Was 49 years ago. 49 साल पुरानी बात है What you don't see in this photograph is, of course, there's another dozen people around Srila Prabhupada. और जो इस फोटो में भी देख पा रहे हो ये कि इस प्रॉपर के चारों तरफ 12 भक्त तकरीबन डजन भक्त और भी बैठे हुए थे Now in London, England, by Bhaktivedanta Manor, good weather was not common in England. इंग्लैंड के अंदर भक्तिवेदांत नगर में अच्छा जो मौसम था वो साधारण बात नहीं होती थी Many cloudy days, rainy days, cold days. वहाँ पर ज़्यादातर वर्षा होती रहती थी या ठंड पड़ती थी But while Srila Prabhupada was there during August, September, it was beautiful weather Krishna provided. पर जब श्रील प्रभुपाद वहाँ पे थे तो वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम होता था कृष्ण की कृपा से And of course, called the Bhaktivedanta Manor was a very big, beautiful house, manor house. और भक्तिवेदांत नगर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर का घर था And Srila Prabhupada had a very nice, big sitting room. और श्रील प्रभुपाद में बहुत ही बड़ा बैठने का कमरा होता था Big bathroom, big bedroom, and everything was the main quarters. But when the sun was shining, Prabhupada would go outside and sit in the grass. और बहुत बड़ा बाथरूम होता था बहुत बड़ा बेडरूम होता था श्रील प्रभुपाद का और जब भी धूप आती थी तो श्रील प्रभुपाद लॉन में बैठ के Like he would speak to us, like 6 Goswami, you just sit under a tree, you chant Hare Krishna. जैसे छह गोस्वामी पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र करते थे श्रील प्रभुपाद भी उसी तरह गार्डन में जाके बैठते थे In fact, in the beginning, 50 years ago, Prabhupada went back to Radha Damodar temple for Kartik month. 50 साल बाद प्रभुपाद राधा दामोदर वापस गए कार्तिक के महीने And that was the first time I got to see Srila Prabhupada's rooms at Radha Damodar temple. और उस समय पहली बार हमने श्रील प्रभुपाद का रूम देखा था राधा दामोदर मंदिर वाला We know, we say that Srila Prabhupada, of course, what he did was bring Vrindavan all over the world. He brought Vrindavan to every town, village in the world. और हमने देखा किस तरह से श्रील प्रभुपाद वृंदावन को लेकर संसार के सारे शहरों में पहुंचे And he literally, just like his rooms were in Vrindavan, he would have the same room wherever he went. Any temple he went, the same, very simple room. और प्रभुपाद जहाँ पर भी अलग-अलग मंदिरों में बहुत ही सिंपल रूम होते थे राधा दामोदर मंदिर की तरह Just cushion on the floor, little desk in front of him. और जो जमीन होती थी उस पे पीछे एक कुशन तकिया होता था और आगे प्रभुपाद का डेस्क होता था जिस पे प्रभुपाद काम करते थे He didn't have big living room, couches, sofas, dining room, tables and chairs. He never had any of that. प्रभुपाद के यहाँ बहुत बड़े लिविंग रूम भी होते थे और सोफे गद्दे और बड़े-बड़े रूम भी होते थे Besides being founder acharya of a worldwide society, he was a sannyasi. हालांकि श्रील प्रभुपाद इतनी बड़ी संस्था के फाउंडर आचार्य थे और सन्यासी थे So he maintained that austere lifestyle of a sannyasi. और प्रभुपाद ने एक सन्यासी का तपस्वी जीवन को बनाए रखा So now you can see, every day he would have me read to him from this Chaitanya Charitamrita. और आप देख सकते हैं रोज मैं श्रील प्रभुपाद जी के लिए चैतन्य चरितामृत से पाठ Actually, my very first service, personal service to Srila Prabhupada was reading Krishna book to him. और प्रभु जी की श्रील प्रभुपाद को सबसे पहली सेवा थी श्रील प्रभुपाद जी के लिए कृष्ण बुक को पढ़ना And that was before I had become his personal servant. और ये सेवा प्रभु जी को प्रभुपाद जी के पर्सनल सेवक बनने से पहले मिली थी So first I'll explain. So every day, and there's a crowd, and so there's some Indians there, life members, and others are sitting there, and they're all listening to Chaitanya Charitamrita. और इसमें कई सारे लोग बैठे थे जिसमें कुछ भारतीय भी बैठे हुए थे और मुझे चैतन्य पढ़ रहा था And what Srila Prabhupada liked so much was in his books, you would see the Sanskrit, or in this case you would see the Bengali, then you would see word to word, and then transliteration. प्रभुपाद जी को अपने घर में अच्छा लगता था कि उसमें प्रभुपाद जी ने एक ही शब्द का अनुवाद किया होता बंगाली का और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन अनुवाद किया होता So of course at this time, I had only been devotee for 2 years.
इस समय तक मैं 2 साल का ही भक्त था, मुझे 2 साल में जुड़े हुए। So even Sanskrit words, we would stumble. तो संस्कृत बोलते हुए भी जुबान लड़खड़ाती थी। But as I'm reading each page, finally Prabhupada made a comment. और मैं क्योंकि एक पेज पढ़ता था, प्रभुपाद ने मेरे ऊपर टिप्पणी की। And he looked at the Indians who were there on the lawn and he said, just see Srutakriti. He doesn't know one word of Bengali. और उन्हें भाषण की तरफ देखे, प्रभुपाद ने टिप्पणी की, देखो ये श्रुतकृति को, इसे बंगाली का एक भी शब्द नहीं आता। He said, but he's speaking so nicely from the book. लेकिन ये किताब से इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। So this was Prabhupada's pride, was these books. He was putting out every month another book, another book, another book. और ये प्रभुपाद का अब स्वाभिमान होता था कि प्रभुपाद एक के बाद एक किताब हर महीने देते जाते थे। And it was at this time that Bhagavad Gita, as it is, when the Macmillan edition came out. और इस समय ही भगवद गीता का मैकमिलन वाला एडिशन छपकर आया। Before that, when they printed Bhagavad Gita back in the late 60s, it was condensed version of Bhagavad Gita as it is. इससे पहले 1960 के अंतिम दशक के अंत में जब भगवद गीता छप के आई थी, तो वो बहुत ही संक्षिप्त गीता का वर्जन था। Of course, all the verses of Bhagavad Gita were there, but not all of the purports. उसमें निश्चित रूप से गीता के सारे श्लोक थे, लेकिन सारे तात्पर्य प्रभुपाद के नहीं थे। No word to word, no transliteration. शब्द हर शब्द का अनुवाद भी नहीं था। So he was very happy when the full version of Bhagavad Gita was finally in print. श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा कि जो भगवद गीता है उसका पूरा का पूरा फुल वॉल्यूम छप कर आया। And in the evening, in his room, he would have an assembly. This many people would come in the room. The devotees that were coming to see Prabhupada, some guests would come. प्रभुपाद के रूम में कई सारे डिवोटीज आते थे और कई गेस्ट भी आते थे मिलने के लिए। Shamsundar, he was at that time GBC. श्यामसुंदर प्रभु उस समय इंग्लैंड के जीबीसी होते थे। Previously, he had been Srila Prabhupada's secretary for 2 years. उससे पहले वो श्रील प्रभुपाद के 2 साल तक सेक्रेटरी रहे। So he wanted to keep Prabhupada at the manor as long as he could. और इसलिए वो प्रभुपाद जी को भक्ति नगर मंदिर में अधिक से अधिक समय तक रखना चाहते थे। So he would bring, every night he would bring different personality into Prabhupada's room, so Prabhupada could preach to them. और इसलिए वो हर रोज नए लोगों को लेके आते थे ताकि श्रील प्रभुपाद उन्हें प्रचार कर पाए और इस तरह से प्रभुपाद प्रेरित रह पाए कि और अधिक हो पाए। He would bring different politicians. वो अलग-अलग नेताओं को लेके आते थे। One evening he brought this race car driver. और एक शाम को रेसिंग कार चलाकर उसके ड्राइवर को लेके। He was a very famous British race car driver, and he had won the, what do they call, Le Mans 500 in driving a car. वो बहुत ही फेमस थे और उसने अवार्ड भी जीता हुआ था फर्स्ट प्राइज रेसिंग रेस में। Srila Prabhupada, he was expert in every situation. श्रील प्रभुपाद बहुत ही दक्ष थे हर परिस्थिति के अंदर। So when this man came, this racer came, Prabhupada spoke to him for 20 minutes about the engine of a car. तो जब ये रेसर आया तो प्रभुपाद ने 20 मिनट तक इससे गाड़ी के इंजन के बारे में चर्चा की। Preaching has many different aspects. You have to know how to reach someone. तो उसको अलग-अलग पहलुओं पे गाड़ी के इंजन की चर्चा की और ये सीखना चाहिए कैसे लोगों को प्रचार कर सकते हैं। Not that you just bang over their head. Krishna is God, you're his servant. ना कि हर लोगों को पीटते रहे और बोलते रहे कि देखो कृष्ण ही भगवान है और तुम उसके सेवक हो। First, you have to win them over. पहले हमें उनके ऊपर जीतना चाहिए। And sometimes preaching means not even talking. Preaching means listening. और कई बार preaching का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, सिर्फ सुनना ही preaching है। To understand person's mentality, to understand what they like, what they don't like, how you can help them. और ये समझना कि उसकी मानसिकता क्या है, क्या उसे पसंद है, क्या नापसंद है, ताकि हम उसकी मदद कर पाएं। And then of course we know Bhaktivedanta Manor was purchased by George Harrison.
और हम जानते हैं कि भक्तिवेदांत बैनर को जॉर्ज हैरिसन ने खरीदा था। He had, of course, a very special relationship with Srila Prabhupada. और उसमें बहुत ही घनिष्ठ संबंध था श्रील प्रभुपाद के साथ। In those days, the devotees would say, "Are you going to initiate George?" और भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछते थे कि आप जॉर्ज को दीक्षा देने वाले हैं? And Prabhupada said, "He's already Hari's son." और श्रील प्रभुपाद कहते थे वो पहले से ही हरि सन है, हरि के पुत्र है। The son of Hari. हरि के पुत्र है। He said, so what he's doing is very, very good. और जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। So the one evening, and of course I'm always in the room because I'm Prabhupada's servant. एक शाम की बात है, प्रभु जी कह रहे हैं मैं हमेशा रूम में होता था क्योंकि मैं प्रभुपाद का सेवक था। तो एक शाम If you had the good fortune of being around Srila Prabhupada, if you came from other places to see him, he expected you to hear from him whenever he was speaking. तो जब अलग-अलग लोग मिल जाते थे श्रील प्रभुपाद से, तो श्रील प्रभुपाद ये आशा करते थे लोग उनसे सुने। I said over time, I was with Srila Prabhupada as a servant to 2.5 years. मैं 2.5 साल तक श्रील प्रभुपाद का सेवक निजी सेवक किया। So that's around 900 days. और ये तकरीबन 900 दिन होते हैं। Prabhupada went on a morning walk every one of those days. प्रभुपाद Was on his morning walk. प्रभुपाद अपनी रोज प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करते थे इन सारे दिनों में। He was on a morning walk every morning, but when I was with him, then I was also on that morning walk. और प्रभु जी भी साथ में होते थे सारी मॉर्निंग वॉक्स में प्रभुपाद। And he expected his servant, his secretary, his Sanskrit editor, everyone that was there, you should be on that morning walk because you have to hear what he's going to say. और श्रील प्रभुपाद आशा करते थे उनके साथ उनके सर्वेंट, सेक्रेटरी, उनके संस्कृत के एडिटर ये सब हों ताकि वो सुन पाए जो श्रील प्रभुपाद बोलेंगे। I sat right there. Every class, Bhagavatam class, Srila Prabhupada would go every day, never miss a class. और मैं बिल्कुल आगे बैठता था श्रील प्रभुपाद की भागवतम कक्षा में मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं करी। He understood his association was the most important thing. क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो संगम बहुत ही महत्वपूर्ण था। So different nights, even different artists, singers, rock stars, many were in England. So also Shyama Sundar would invite one every evening, different person. You wouldn't know their names. और श्याम सुंदर प्रभु कभी-कभी रॉक स्टार्स को बुलाते थे, अलग-अलग रात को एक-एक रॉक स्टार को बुलाते थे, श्रील प्रभुपाद से मिलवाते थे। So the one evening, of course, George Harrison came. So we all knew that evening he was going to come. और एक शाम को जॉर्ज आए मिलने के लिए श्रील प्रभुपाद से। He was very, very sweet, George, very humble. जॉर्ज बहुत ही स्वीट, भक्ति मधुर थे और बहुत ही विनम्र थे। And he was also very attracted to Srila Prabhupada because he saw his humility. और वो जॉर्ज भी बहुत ही प्रभुपाद से बहुत ही आकर्षित थे क्योंकि उन्होंने भी श्रील प्रभुपाद की विनम्रता देखी। He could see Srila Prabhupada had temples all over the world, had thousands of followers. उन्हें पता था कि श्रील प्रभुपाद के मंदिर पूरे संसार में और उनके हजारों शिष्य हैं। He had access to millions and millions of dollars. और उनका जो कई लाखों लोगों पे प्रभाव है। But he had no attachment to any of it. It was all Krishna's. पर श्रील प्रभुपाद इनकी किसी से भी आसक्त नहीं थे क्योंकि ये सब कृष्ण को बिलोंग करते थे। George, like Srila Prabhupada, he was not very tall. He was short. जॉर्ज की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, वो शॉर्ट। And of course now he always had his long hair. और बड़े-बड़े बाल थे जॉर्ज के। So he would come that evening to see Srila Prabhupada, of course, and he would offer his dandavats to Srila Prabhupada. तो वो शाम को श्रील प्रभुपाद से मिले और उन्होंने प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया। Of course, Prabhupada's disciples, many of us came from hippies. और जो प्रभुपाद के शिष्य थे ज्यादातर लोग हिप्पी कल्चर से आए थे। Many of Prabhupada's disciples, the first time they heard Hare Krishna mantra was from a song by George Harrison, My Sweet Lord. और बहुत सारे लोगों ने पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र जॉर्ज हैरिसन के प्रसिद्ध गान My Sweet Lord से सुना था। So some of my god brothers, god sisters, they were very much
I'm excited to see George. और कई सारे प्रभु जी के गुरु भाई और गुरु बहनें जॉर्ज हैरिसन को देखने के लिए बहुत ही आतुर थे। But George just wanted to be a humble devotee, like everyone before Srila Prabhupada. और जब जॉर्ज हैरिसन बहुत विनम्र पढ़ते। So when he came, of course, immediately what would Prabhupada say? He greeted George, rubbed his head. और जैसे जॉर्ज प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद ने जॉर्ज का अभिनंदन किया, उसके सर पर पूरा हाथ रखा। And then Prabhupada said, bring him prasadam. और प्रभुपाद ने बोला कि इनके लिए प्रसाद लेके आइए। Not in a special place, just like group is here. Bring him prasadam right there in front of him. While everyone else is sitting there. George has this big plate of prasadam. और सही काफी सारे भक्त बैठे थे, लेकिन जॉर्ज हैरिसन के लिए बहुत ही बड़ी प्लेट में प्रसाद रखा। And George was also, like I say, he was very shy. Prabhupada, he said, I had just eaten. और जॉर्ज बहुत शर्मा रहे थे और वो प्रभुपाद के साथ को बोला कि अपने प्रसाद खाएं। Prabhupada insisted you take prasadam. लेकिन प्रभुपाद ने उनको जोर दिया कि आपको प्रसाद पाना है। Of course, devotees knew he was coming, so they made very nice feast prasadam for George. अब भक्तों को पता ही था कि जॉर्ज आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा व्यंजन और प्रसाद बनाया था जॉर्ज हैरिसन के लिए। So there's puris, halava, samosas, pakoras. मतलब पूरी हलवा पकोड़ा समोसा ये सब थे। And they put it down in front of George. और ये सब उन्होंने जॉर्ज हैरिसन के आगे रखा। And Prabhupada said, take prasadam. और प्रभुपाद को प्रसाद पाओ। So George was submissive to his spiritual master. So he's eating prasadam. So जॉर्ज अपने आध्यात्मिक गुरु के आगे शरणागत थे और वो प्रसाद ग्रहण करने लगे। So then as he's finishing his plate, Prabhupada said, more prasadam, more prasadam. और जैसे प्रसाद खत्म हो गया और जाने लगे तो प्रभुपाद ने कहा नहीं और प्रसाद लेके आइए। And George said, Prabhupada, I can't eat anymore. और जॉर्ज कहने लगे कि प्रभुपाद और नहीं खा सकता। And Prabhupada said, take prasadam. Prasadam can never hurt you. और प्रभुपाद ने बोला कि और प्रसाद पाओ, प्रसाद आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। There's a picture at that time. That's a picture of George Harrison there. और ये सभी पिक्चर जॉर्ज हैरिसन थी। So they have very sweet relationship. और इनका बहुत ही मधुर संबंध था श्रील प्रभुपाद जी के साथ। So every evening, Prabhupada, of course, would take the opportunity, he was always explaining Krishna consciousness. तो हर शाम को श्रील प्रभुपाद मौका ढूंढते थे लोगों को कृष्ण भावना को समझाने का। And now he had Bhagavad Gita as it is. और अब हमारे पास भगवद गीता as it is है। And all of you should be familiar with Srila Prabhupada's books. What do you have in the back of the book? तो आप सब लोग बहुत ही फेमिलियर हैं, आप सबने देखी है भगवद गीता as it is को, तो उसके बैक साइड में कवर पेज में क्या है? So many pages in the back of the book. What is it called? तो बहुत सारे पेज किताब के अंदर से क्या रहते हैं? Of course, you have the index, and then you have the verses. First verse, third verse of every verse in that book in Bhagavad भगवद Gita. गीता के अंदर पहले श्लोक की पहली और तीसरी लाइन दी गई है। So Prabhupada would quote one verse, Dehinosmin Jatana Dehe. अब प्रभुपाद एक श्लोक का उच्चारण करते थे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। And then, of course, I'm holding this Bhagavad Gita. He said, find that verse. और प्रभु जी के हाथ में भगवद गीता होती थी, प्रभुपाद कहते थे इस श्लोक को ढूंढ लेता हूँ। And he wanted me to go to the back of the book to identify the words he said. You know, you would look up. You would just look up A, B, C, D. You would find Dehinosmin, and then you would go to the verse. अब प्रभुपाद मुझसे आशा करते हैं कि मैं तुरंत वो ढूंढ के निकालूं। मैं किताब के अंत में जाता था और उसमें से वो श्लोक निकालता था, ABCD ढूंढ के तो देखो, फिर श्लोक पे पहुंचते थे। Well, Sarvadharman, whatever it might be, he would say every evening, once, twice, three times, find that verse, he would say, and I go to the back, because I didn't know the verses. सर्वधर्मान और कोई सा भी वर्ष हो, उसी हर शाम को प्रभुपाद 1, 2, 3, 4, 5 बार कहते थे कि इन वर्षों को ढूंढ निकालिए और मैं निकालता था, फिर मुझे श्लोक याद नहीं थे। He wanted to show that these were our law books. प्रभुपाद ये स्थापित करना चाहते थे कि जो हमारे ग्रंथ हैं ये कानूनी किताबें हैं। And whatever we were saying was based on the books, the Shastra. और जो भी हम कह रहे हैं वो इन शास्त्रों पे आधारित होता है।
not our imagination, but from Shastra. ये हमारी कल्पना नहीं है, ये शास्त्रों पे आधारित है। And then he would say like that, just like the lawyer, when he's arguing a case, he doesn't just come up with his own idea. He looks back from the past to find same kind of case, references. जिस तरह से वकील जब कोई केस लड़ता है तो वो पूर्व जो केस हुए होते हैं उनको रेफरेंस उनको कोट करता है, उसी तरह श्रील प्रभुपाद भी श्लोकों को कोट करते हैं। So he kept emphasizing how these books, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, there are law books. This is what we speak from. तो श्रील प्रभुपाद इस पे जोर देते थे, बात देते थे कि जो भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है, श्रीमद् भागवतम है, इनको हम शरण करें। And it was at that time he said, these are our law books next 10,000 years. प्रभुपाद कहते थे ये है कानूनी किताबें हैं अगले 10,000 सालों के लिए। I said how Srila Prabhupada, last night I was speaking, he could see the future. He understood how important what he was doing was, how important these books were, not just now, but ongoing. जैसा मैं कल रात को भी बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद भविष्य को देख सकते थे, प्रभुपाद जानते थे कि उनकी किताबें कितनी महत्वपूर्ण है, सिर्फ अभी के लिए बल्कि आगे 10,000 साल के लिए। I was emphasizing how every night Prabhupada would do his translating work, every evening. अब बता रहा था कल कि हर रात को प्रभुपाद ग्रंथों का अनुवाद करते थे। It wasn't just for his disciples, it was for grand disciples, every generation in the future, these books are most important. वो ग्रंथों का अनुवाद सिर्फ अपने शिष्यों के लिए नहीं कर रहे थे और उनके शिष्यों के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भी शिष्य, उनके शिष्य और जितनी भी आने वाली पीढ़ी है उन सबके लिए कर रहे थे। So at that time, again, Shyamasundari would get different people to come to see Srila Prabhupada. और श्याम सुंदर प्रभु रोज अलग-अलग लोगों को लेकर आते थे श्रील प्रभुपाद से मिलवाने के लिए। One afternoon, these two ladies came, young ladies came also to see Srila Prabhupada. और एक दोपहर में दो स्त्रियां प्रभुपाद से मिलने आई। So they had a problem that they presented to Prabhupada. और उनकी एक समस्या तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद के आगे रखी। And they were hoping that this Swamiji from India, he could solve that problem. और उनको आशा थी कि ये जो स्वामी है भारत से ये उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। They had ghosts in their house. और उनके घर में भूत थे। Nasty ghosts. Bad. Nasty ghosts. Scary. बहुत ही भयानक खतरनाक भूत। So they told Prabhupada, is there any mantra, any special mantra, anything we can do to try to get rid of these ghosts? तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि क्या हमारे पास कोई ऐसा खास मंत्र है जिससे हम भूतों को भगा सकें? So of course, Prabhupada's disciples were all in the room, I'm in the room, and when they said, is there any mantra, any special mantra, we're all laughing, thinking, yes. तो जब उन्होंने ऐसा प्रश्न रखा प्रभुपाद के आगे तो हम सब नहीं पढ़ते, तो हम सब हंसने लगे और हमें पता था हाँ हमारे पास है। So of course, Prabhupada said, yes, we have a mantra. और ये of course प्रभुपाद ने ये बोला कि हमारे पास मंत्र है। And then he told them, you chant this mantra, he said, ghosts will be gone. अब प्रभुपाद ने बोला अगर आप इस मंत्र का जप करोगे तो सारे भूत चले जाएंगे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And then he told them a story when he was grahastha. अब प्रभुपाद ने एक कहानी बताई जब वो गृहस्थ थे। He said, when he was doing his work, there was this one house for rent. It's a very big, beautiful place. तो जब प्रभुपाद अपना व्यापार करते थे तो बताया कि एक किराए का घर था बहुत बड़ा सा। But rent was very cheap. No one would rent it because it was inhabited by ghosts. तो उस घर का किराया बहुत ही कम था क्योंकि उसमें पहले से भूत रहते थे। He said, so I rented it for a very good price. तो प्रभुपाद कह रहे मैंने उससे बहुत ही सस्ते दाम में ली। He said, and sometimes he said he would come back from work in the evening, he would be sitting in his chair, a rocking chair, and be chanting. अब प्रभुपाद कह रहे जब मैं शाम को आता था तो उस पे बैठता था रॉकिंग चेयर पर और जप करता था।
He said, and you would see things moving this way, that way. Ghosts were doing so many things. और देखता था कि वस्तुएं इधर से इधर घूम रही है, भूत से लेके जा रहे हैं। But of course, he said, I just chanted. He said, and eventually he said, they all just left that place. और प्रभुपाद बता रहे कि मैं जप करता रहता था और अंततः वो सारे भूत वहां से चले गए। So Prabhupada, he was always so much fun to be with. और प्रभुपाद के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा हास्यप्रद और ज़्यादा फन होता था उसमें। And George had a very wonderful relationship with George Harrison. और जॉर्ज हैरिसन के साथ बहुत ही मधुर संबंध थे, अद्भुत संबंध थे। And the one evening, George was talking to Srila Prabhupada. एक शाम को जॉर्ज श्रील प्रभुपाद जी के साथ बात कर रहे थे। And he said, I'm chanting my rounds. और वो कह रहे थे प्रभुपाद को कि मैं अपने नाम जप करता हूँ। He said, but when I keep chanting, he said, Hare Krishna, he said, I become disinterested in all this business activity. और जब मैं जब करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो व्यापार कर रहा हूँ मुझे सारा बंद कर देना चाहिए। He said, sometimes it becomes difficult, even dealing with my family members. He said, I become very aloof. I don't want to be involved in any of this. और कई बार मुझे अपने परिवार वालों के साथ रहना भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था मैं बिल्कुल एकांत में रहूं और भक्ति करूं। But Prabhupada, he was smiling, laughing. He said, you just chant. He said, whatever you can chant, you chant. He said, you carry on. He said, you have very good service you can do, present to everyone. तो प्रभुपाद मुस्कुराए और हंसते हुए जवाब दिया कि जो आप जप करते रहिए और साथ में अपना जो सेवा है वो करते रहिए, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तो सेवा को करते रहिए। He knew how influential George was. प्रभुपाद जानते थे कि जॉर्ज कितने प्रभावशाली हैं। So he said, you continue doing what you're doing. He said, that's the best thing. So he said, you chant. He said, and you just have to go on. He said, as you're doing. प्रभुपाद जी जानते थे जो कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं, उन्हें आदेश दिया कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, व्यापार वगैरह, और साथ में जप भी करिए। You know, there was, back in 1970, of course, this was when they were ready to print the first volume of Krishna book. तो 1970 में जब कृष्ण बुक छपने वाला था, You're all familiar with Krishna book? आप सब लोग कृष्ण बुक के बारे में सुना होगा? So in the very first pages of Krishna book, what is there? तो कृष्ण बुक के पहले पेज पे क्या है? Dedication by George Harrison, right? तो उसके पहले पेज में जॉर्ज हैरिसन के द्वारा को डेडिकेट किया गया है। So when the book was ready for printing, there was not so much money in ISKCON's coffers, ISKCON's hundi box. Not so much money was there. तो जब कृष्ण बुक छप रही थी तो उस समय इस्कॉन के पास पैसा नहीं होता था, उनकी हुंडी बिल्कुल खाली थी। And Prabhupada told his secretary, Shyama, he said, you ask George for $10,000 to print. श्रील प्रभुपाद ने अपने सेक्रेटरी श्याम सुंदर को बोला कि आप $10,000 के लिए जॉर्ज हैरिसन से बात करिए। So Shyama Sundar, he had been cultivating George. They had become very, very close friends. और जो श्याम सुंदर प्रभु थे वो जॉर्ज हैरिसन को कल्टीवेट कर रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे और बहुत ही अच्छे मित्र बन रहे थे। And Shyama Sundar became afraid. He said, Prabhupada, he said, I've never asked him for any money. और श्याम सुंदर बहुत घबरा रहे थे और उन्होंने बताया प्रभुपाद मैंने कभी भी जॉर्ज हैरिसन से धनराशि की मांग नहीं करी है। You know that, huh? You're in it. Someone has a lot of money. Worst thing you can do is tell them you want their money. अगर किसी के बहुत पैसा है तो उसको सबसे जो वर्स्ट चीज कही जा सकती है वो ये है कि मुझे आपका धन चाहिए। He said, Prabhupada, he said, if I do that, he said, our whole relationship, who knows what will happen. तो श्याम सुंदर को कह रहे थे, घबरा रहे थे कि अगर हम उनसे धनराशि मांगेंगे तो मेरा सारा का सारा उनसे संबंध खराब हो सकता है। Prabhupada said, don't worry. He said, you ask him. अब प्रभुपाद ने बोला आप घबराओ मत, आप सिर्फ मांगिए उनसे। So finally, the one evening, Shyama Sundar and George, they're talking in the kitchen of his manor house. और एक शाम को जॉर्ज हैरिसन और श्याम सुंदर
उधर उस मैनर के किचन में वार्ता कर रहे थे। So finally, Shyama Sundar, he said to George, we're printing Krishna book. And Prabhupada wants if you can make a donation, $10,000. और श्याम सुंदर ने जॉर्ज एलिसन को बताया कि हम कृष्णा बुक छाप रहे हैं और प्रभुपाद ने चाहते हैं कि आप इसकी छपाई के लिए $10,000 का दान कीजिए। At that time, 1973, that's like asking for 1 crore rupees. It's a big, big amount. और 1973 में $10,000 आज के तकरीबन करोड़ रुपए के समान है। And as soon as he said that to George, he saw George's face drop down. और जैसे ही उन्होंने बात जॉर्ज को बोली, उन्होंने देखा कि जॉर्ज का चेहरा लटक गया। And right at that time, there was a thunderstorm, big crack of lightning. और उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर तूफान आया और लाइट चली गई। And all the electricity went out in the house, completely dark. You could not see in front of you. और हम बिल्कुल अंधेरा छा गया, पूरा लाइट चला गया, अपने सामने भी किसी को नहीं देख पा। So then after some time, of course, the lights came back on. और थोड़े ही क्षण बाद उधर फिर बिजली आई। Then George had a big smile on his face. जॉर्ज एलिसन के मुंह पे बहुत बड़ा मुस्कान था। He could understand it was Krishna's arrangement, and he happily gave the donation to print a Krishna श्याम book. सुंदर को समझ पाए कि भगवान का ही अरेंजमेंट है और उन्होंने जॉर्ज ने इनको डोनेशन किया। So my very first service to Srila Prabhupada, before I was his servant, was reading Krishna book to him in his garden in Los Angeles. तो मेरी श्रीला प्रभुपाद की सबसे पहली सेवा थी उनके सेवक बनने से निजी सेवक बनने से पहले उनके लिए कृष्ण बुक को पढ़ना। I had traveled from the other side of the country, 5,000 kilometers, to get Brahmin initiation from Srila Prabhupada. तो मैं तकरीबन 5,000 किलोमीटर दूर गया था श्रीला प्रभुपाद से ब्राह्मण इनिशिएशन लेने के लिए। But because I was with his first sannyasi disciple, Kirtanananda Swami, I got to go into Prabhupada's garden every afternoon. तो क्योंकि मैं उनके पहले सन्यासी शिष्य के साथ था तो मैं उनके बहुत समीप तक जाना है। It was a very small garden, privacy wall around it, and there's just 5 or 6 devotees, brahmacharis, sitting in front of Prabhupada. तो वो जो बगीचा था वो बहुत छोटा सा ही था और उसमें 5-6 ब्रह्मचारी बैठे थे। And the temple president handed me that Krishna book, volume 1. और जो वहाँ के मंदिर के अध्यक्ष थे उन्होंने मुझे कृष्णा बुक का पहला खंड दिया। And of course, we would go in, offer obeisances, and he says, when Prabhupada asks, you read Krishna book. और मैंने वहाँ पर प्रभुपाद को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि प्रभुपाद चाहते हैं उनके लिए कृष्ण बुक को पढ़ो। Prabhupada didn't just tell us to read his books. You can see, he was reading his books. He was hearing his books. प्रभुपाद ने सिर्फ हमें ही बोला अपनी किताबें पढ़ने, उनकी किताबें पढ़ने के लिए, बल्कि प्रभुपाद खुद भी अपनी किताबें पढ़ते थे, प्रभुपाद उन्हें सुनते भी थे। So I'm sitting there, I'm holding Krishna book, and at some point Prabhupada would just look at me. और मैं कृष्ण बुक को पकड़ के मैं उसे पढ़ रहा था और एक समय पर श्रील प्रभुपाद मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। That meant read, now you can read. इसका मतलब था कि आप पढ़ो इसको। So I just opened the book, I found one story. और मैंने किताब को खोला और मेरे को एक कथा मिली। I don't remember the story, but I'm reading, and we're all listening. और मेरे को ये तो नहीं पता कौन सा वास्तव था, लेकिन मैं पढ़ रहा था और प्रभुपाद सुन रहे थे। And of course, Srila Prabhupada, he's listening. और प्रभुपाद उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। So in the story, I came to the point where Krishna, he's killing this demon. और उस लीला में एक समय ऐसा है जब मैंने देखा कि कृष्ण असुर को वध कर रहे थे। And when I said that, Prabhupada started laughing and laughing. और जब मैंने कहा तो प्रभुपाद हंसने लगे और हंसने लगे। And his laughing grew, and he started shaking. His whole body is shaking. Everything is shaking. तो प्रभुपाद इतना हंस रहे थे कि उनका पूरा शरीर पूरा हिल रहा था। And then tears are coming down his eyes. He's laughing so much. और इतना हंस रहे थे कि उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे थे। And he continued laughing and slapping his knee. And he's laughing, listening to this story. और कथा सुनते जा रहे थे और प्रभुपाद अपने पैरों में भी ऐसे मारते जा रहे थे, हाथ को
Everyone, we're just listening, but Prabhupada, he was right there. और सब लोग भी सुन रहे थे लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल उसमें डूबे हुए थे। He was listening on a very different level. प्रभुपाद कुछ अलग स्तर पर सुन रहे थे। So now we're all laughing. और हम सब भी अब हंसने लगे। We weren't laughing because of the story. We're laughing just watching Prabhupada in ecstasy. तो हम लीला में तो नहीं हंस रहे थे लेकिन हम हंस रहे थे प्रभुपाद के रिएक्शन के ऊपर प्रभुपाद को हंसता हुआ देख के हम भी हंस रहे थे। At that moment I understood this Krishna consciousness. This is what I want. और उस समय मेरे को समझ आ गया कि यही मुझे चाहिए। Up until that time is all we knew. You chant your rounds, you work hard, you get up early in the morning, and you'd be very serious. और उससे पहले तक यही चल रहा था कि आपको माला करनी है, बहुत मेहनत करनी है और सुबह मंगल आरती के उठना है। Laughing was not a regular activity for us. हंसना तब तक नियमित कार्य नहीं होता था। So seeing Srila Prabhupada like that, we all became more attached to Prabhupada. So every afternoon, I'm the Krishna book reader. In those days, as soon as you were given a service, that was your service. The rest of your life, you're going to do that service. That was your duty. Your duty. So for me, that was very wonderful duty. So the next day, I had a plan. I'm going to read another story about Krishna Balaram killing a demon. And I convinced myself that when I say this one sentence, Prabhupada's going to do the same thing. He's going to laugh and laugh and laugh. So I didn't know so many Krishna stories at that time, but I had my favorite story. I said, when I read this story, Prabhupada's going to laugh just like yesterday. Imagine that I thought that I could make something like that happen. So my story was the story of the Vid gorilla. As a young man, boy, we always like these kind of stories. Huh? So we're sitting, Prabhupada chanting, sometimes he would talk. And then he looked at me, read. My heart's beating so fast because I'm expecting so much to happen. And I started reading the story of the Vid gorilla. You all know that story, yes? He was a big, black, ugly gorilla, demon. And he was very angry. And he was watching yajna going on, a fire yajna going on. He's hiding behind the bushes. And Brahmins are performing this fire sacrifice. So then what does he do? At one point he comes out and he starts passing urine on the fire. So that was the point. When I read that, I think Prabhupada was going to laugh and laugh because I thought that was very, very funny. So as I'm getting to the line, I'm getting more and more tense.
And then finally I said the words. और फिर मैंने फाइनली उसको बोला And Prabhupada started laughing. और प्रभुपाद हंसने लगे Just like yesterday. जिस तरह से पिछले दिन हंस रहे थे And his laughing increased and increased, and he's shaking his whole body. When Prabhupada laughed like no one I ever saw, his whole body was shaking, and he's laughing and laughing, and he's slapping his leg, and everyone is laughing in ecstasy because Prabhupada's laughing. और प्रभुपाद बहुत हंस रहे थे पूरा बॉडी उनका शेक हो रहा था वो अपने पैरों पे स्लैप कर रहे थे और प्रभुपाद के साथ सारे शिष्य हंस रहे थे सारे शिष्य हंस रहे थे क्योंकि प्रभुपाद हंस रहे थे और इस तरह से बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था वहाँ पर I could understand Prabhupada knew everything was going on in my mind, but he satisfied my desire, and he was laughing and laughing. अब प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और मैं समझ पा रहा था अपने मन में कि श्रील प्रभुपाद मेरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं And then I continued with the story. और फिर मैंने आगे कथा पढ़ना शुरू किया We know Krishna is source of your intelligence, your forgetfulness, everything. और हम जानते हैं कि कृष्ण हमारी जो बुद्धि है उसके स्रोत है और हमारी जो स्मरण शक्ति है उसके स्रोत है So the next day came. और फिर अगला दिन आया Krishna took away all my intelligence. और कृष्ण ने मेरी सारी बुद्धि हर ली I went into the garden and I hadn't prepared my story about a demon. और जब मैं बगीचे में गया मैंने अपनी जो प्रॉपर के लिए कथा पढ़नी थी वो चुन रखी थी And Prabhupada entered the garden, sat down on his asana, devotees, we all offered obeisances and sat down. अब प्रॉपर बगीचे में आए वो बैठ गए और सारे भक्तों ने प्रणाम किया वो भी बैठ गए And before I could prepare anything, he looked at me, he said, read. और कुछ इससे पहले मैं प्रिपेयर करता प्रॉपर ने सीधा बोला पढ़ो He was controlling everything. प्रॉपर हर चीज को नियंत्रित कर रहे थे But I hadn't found my story about a demon. I thought Prabhupada likes these demon stories so much, he's going to laugh and laugh every day. तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं एक असुर के बारे में कथा पढ़ूंगा क्योंकि प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता है प्रभुपाद हंसते हैं लेकिन मैं वो ढूंढ नहीं पा रहा था But he knew what I was doing. He said, read. वो उन्हें पता था मैं समझ पा रहा था मैं क्या कर रहा हूँ इसलिए उन्होंने सीधा निर्देश दिया पढ़ो So then I started trying to find very quickly a story about Krishna and Balaram killing a demon. और मैं बहुत ही जल्दी ढूंढ रहा था वो कृष्ण बलराम की कथा जिसमें उन्होंने एक असुर को मारा He looked at me. He said, anywhere. और प्रभुपाद ने मेरी तरफ देखा और कहा कहीं से भी पढ़ो He said, Krishna is like a sweet ball. Wherever you bite is sweet. और प्रभुपाद ने कहा कृष्ण एक गुलाब जामुन की तरह स्वीट बॉल की तरह कहीं से भी खाओ वो मधुरी है So I just found a story and read. और मैंने कोई एक कथा देखी और पढ़ना शुरू किया But it wasn't a story about a demon. And Prabhupada, that day he didn't laugh. But he gave instruction. Krishna is sweet everywhere. Every piece of him is sweet. Everything he does is sweet. वो एक असुर की कथा नहीं थी और प्रभुपाद उस दिन कोई हंसे नहीं लेकिन उन्होंने एक आदेश दिया कि कृष्ण पूर्ण रूप से मधुर है और कहीं से भी हम उनका स्वागत करें तो मधुरता प्राप्त हो But every day in his room in the afternoon, he was reading his books. और हर रोज दोपहर को प्रभुपाद अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ते थे And he was training us to also read these books. और प्रभुपाद हमारे को भी प्रशिक्षित कर रहे थे उनके ग्रंथ पढ़ने के लिए This is how we're able to remain in Krishna consciousness, by understanding the philosophy, understanding our position. तो इस तरह से हम कृष्ण भावना में बने रह सकते हैं अपना सिद्धांत समझ के और इसके अंडरस्टैंडिंग को समझ के If we're just here out of sentiment, then gradually you go away. अगर किताबें पढ़ेंगे तो हम सिर्फ भावुकता के स्तर पर भक्ति करेंगे और फिर एक दिन चले जाएंगे One day I was in Australia. एक दिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर So Prabhupada was staying in a place there was no temple, so it was just his entourage and 2-3 brahmacharis helping. तो उस समय इस का मंदिर नहीं होता था प्रभुपाद एक स्थान पर रुके थे वहाँ पर 2-3 ब्रह्मचारी थे Australia had very, very nice milk products. ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही अच्छे दूध के पदार्थ मिलते थे Like in England, they had half a dozen different kinds of creams. जैसे कि इंग्लैंड में भी कई तरह की हजारों प्रकार की जो क्रीम मिलती थी So in those days we were young, we would eat lots of prasadam,
और उस समय हम बहुत युवा होते थे और बहुत सारा प्रसाद पाते थे। And we're traveling with Prabhupada, so we have a big lunch and then we fall asleep after lunch. और हम प्रभुपाद के साथ ट्रैवल करते थे और बहुत बड़ा लंच खाते थे बहुत सारा और उसके बाद सो जाते थे। So one afternoon, I hear Prabhupada's bell ringing. और एक दोपहर को प्रभुपाद जी अपनी घंटी बजा रहे थे। I was sleeping, everyone's sleeping, me, the secretary, Sanskrit editor, the Brahmin, and we're all sleeping soundly after eating big lunch. तो प्रभुपाद बल बजा रहे थे, हमें सुनाई नहीं रही थी क्योंकि हम सब बहुत बड़ा लंच फीस्ट खा के सो रहे थे। So finally I heard the bell, I go into the room, I'm in moods, Tamaguna, offering obeisance, I'm trying to make my eyes look alert while I'm down on the ground. और फाइनली मुझे घंटी सुनाई दी, मैं प्रभुपाद के रूम में गया, दंडवत किया और प्रयास कर रहा था किसी तरह मेरी आंखें खुल जाए और मैं इस तरह पहुंचा। And while I'm down on the ground offering obeisances, Prabhupada's already chastising me. और प्रभुपाद को प्रणाम कर रहा था और प्रभुपाद मुझे डांट रहे थे। I've been ringing this bell for hours. और 1 घंटे से घंटी बजा रहा हूँ। And I sat up. He said, everyone's sleeping. हर कोई सो रहा है। Like dead men. मृतक के समान। He says, our devotees all sleeping very nicely. सारे भक्त बहुत ही अच्छे से सो रहे हैं। He said, the karmis, they're out working very hard for their sex life. यहाँ पर जो ब्रह्मचारी हैं, ये बहुत अच्छे से सो रहे हैं और भौतिकवादी को देखो वो मैथुन सुख के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। But the devotees sleeping very nicely. Like dead men. और जो ये भक्त हैं, बहुत ही अच्छे से सो रहे हैं, मृतक के समान। And then he looked, he said, call them. और फिर उन्होंने बोला सबको बुला के लाओ। So I knew it was going to happen. मैं समझ रहा था क्या होने वाला है। It happened many times. कई बार हो चुका था। He didn't like us sleeping. वो हमें पसंद नहीं करते थे सोना। So I went back into the room and first I tapped my godmother Paramahamsa. I said, Prabhupada wants to see you. और जब मैं अपने कमरे में वापस आया, वहाँ पर मेरे गुरु भाई थे, मैंने बोला प्रभुपाद आपको देखना चाह रहे हैं। So he knew what was going to happen. वो भी समझ रहा था क्या होने वाला है। And then I went up to the Australian brahmacharis and Prabhupada wants to see you. और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रह्मचारियों के पास गया, उन्होंने बोला प्रभुपाद आपसे मिलना चाह रहे हैं। They were very happy. They didn't know what was going to happen. वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें ये पता था क्या होने वाला है। And I didn't tell them. और मैंने उन्हें नहीं बताया। These were our pastimes with Srila Prabhupada. This was our Krishna book. और इस तरह से हमारी श्रील प्रभुपाद के साथ लीला होती थी और ये हमारी कृष्णा बुक है। Prabhupada, he was going to kill all us demons. और प्रभुपाद हम सब असुरों को मारते थे। So we all go in together. Just a little room, we all go in together and offer obeisances. और छोटे से रूम में सारे गए इकट्ठे और हमने प्रणाम किया। Prabhupada said the same thing to them. He said to me, sleeping like dead men. प्रभुपाद को भी वही बोला जो मुझे बोला था कि तुम सब मृतक के समान सो रहे हो। Prabhupada would use very powerful adjectives when he talked to us. प्रभुपाद के पास बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव होते थे, हम से बात करते थे विशेष। He said the same thing to them. Everyone, you would say karmis, Prabhupada used that expression. The karmis are all working very hard for their sex life. अब प्रभुपाद सबको भी बोला देखो कर्मी लोग बहुत मेहनत करते हैं मैथुन सुख के लिए। So these brahmacharis, they were ready to die, Prabhupada yelling at them. और जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रह्मचारी थे तो बिल्कुल इनका प्राण ही निकल रहे थे क्योंकि प्रभुपाद उन पे गुस्सा हो गए थे। So after chastising us very soundly, he said, go back to your room and sleep like dead men. So we all got up, went back to the room. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. No one's sleeping anymore. So after a few minutes again, I hear the bell ring. I was always the one that had to go into the room first.
So I go in the room, offer obeisances as I sit up. और मैंने रूम के अंदर गया, प्रणाम किया और खड़ा हुआ। Prabhupada again says, call everyone. प्रभुपाद दोबारा से बोला सबको बुला के लाओ। So I go back into the room. Prabhupada wants to see you all. और दोबारा रूम में गया और मैंने बोला सबको प्रभुपाद आपसे मिलना चाह रहे हैं। These brahmacharis were not so excited this time. और स्कूल वाले ब्रह्मचारी इस बार इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं थे मिलने के लिए। So we all go back to the room, we offer obeisances and sit up. और हम सब दोबारा रूम में गए, प्रभुपाद को प्रणाम किया और फिर बैठे। Prabhupada looks at one of the brahmacharis, says, get a book. अब प्रभुपाद ने एक ब्रह्मचारी को बोला किताब लेके आओ। In Prabhupada's room, there was always a bookshelf with books. अब प्रभुपाद के रूम में एक किताबों की अलमारी हुई थी, उसमें किताबें थी। His books, no other books, his books. उसमें प्रभुपाद के ग्रंथ होते थे, दूसरों के नहीं होते थे। So Prabhupada says, get a book. The brahmachari, which book, Prabhupada? तो प्रभुपाद ने बोला किताब लेके आओ, तो ब्रह्मचारी उससे कौन सी किताब प्रभुपाद? What did Prabhupada say? Any book. He's yelling, any book. प्रभुपाद चिल्ला के बोला कोई सी किताब। So the brahmachari gets the book. Prabhupada says, read. अब वो ब्रह्मचारी करते करते किताब लेके आए और प्रभुपाद ने बोला पढ़ो उसे। Brahmachari looks at Prabhupada. Where should I read, Prabhupada? I'm like, ब्रह्मचारी ने पूछा मुझे कहाँ से पढ़ना है? Prabhupada says, anywhere, just read. प्रभुपाद बोला कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ो। So then he started reading. और फिर उन ब्रह्मचारी ने पढ़ना शुरू किया। So in this way, Prabhupada showed everyone that he loved all of us. He was just trying to get us to do what we should be doing. तो प्रभुपाद इस तरह से दिखाना चाहते थे, प्रभुपाद हम सबको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन साथ में प्रभुपाद आशा करते थे कि हम वो करें जो हम से आशा की जाती है। Not just eating and sleeping, सिर्फ खाएं और सोएं नहीं, chanting, reading his books, preaching, हम जप करें, उनके ग्रंथों को पढ़ें और प्रचार करें, just as he was doing. जैसा कि वो खुद कर रहे हैं। Everything he asked us to do was what he was doing. उन्होंने जो भी हमें बोला करने के लिए वो खुद भी उसे करते थे। So if you do these things, you chant, you rise early in the morning, you read his books, everything will come. Prabhupada said at the end of this life, we go back home, back to Godhead. तो जो भी हम कर रहे हैं, जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, सुबह आरती आना, ये सब करेंगे तो हम भी अंत में जीवन के भगवधाम चले जाएंगे। So for all of us, this is our business that Srila Prabhupada desires us to do. और यही हमारा व्यापार है, ये श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। So I think we'll stop here if anyone has any questions. हम विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Thank you so much for your first time. As you mentioned, you read every day Krishna Mukha Prabhupada. So once I heard one story in Janmashtami night. So New Vrindavan. तब प्रभु जी प्रभुपाद जी के लिए कृष्ण तक पढ़ते थे, तो एक फास्टर है जो न्यू वृंदावन मंदिर के अंदर हुआ था, जन्माष्टमी की रात्रि को जब प्रभुपाद जी ने पढ़ने के लिए बोला था, तो प्रभु जी बताएंगे उसके बारे में। That was 1972. That was when I became Prabhupada's servant, right when he left New Vrindavan at that time. तो ये उस समय की बात है 1972 की, जब मैं प्रभुपाद का सेवक बना था। So of course, there were many hundreds of devotees there. They had come from all over USA to be with Srila Prabhupada. तो उस समय सैकड़ों से ज्यादा भक्त थे, पूरे अमेरिका से इकट्ठे हुए थे न्यू वृंदावन के अंदर, वेस्ट वर्जीनिया। So same thing, Prabhupada, he's sitting on the Vyasa-san. It's in the evening time as it's getting 10 o'clock at night, 11 o'clock at night. और ये रात्रि 10 बजे की बात है, श्री प्रभुपाद अपने व्यासासन पे बैठे हुए हैं। And devotees reading Krishna book, Prabhupada sitting, he's listening very intently. भक्त लोग कृष्ण पढ़ रहे थे, प्रभुपाद बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। But he can see the devotees in the temple room. प्रभुपाद देख सकते थे कि जो भक्त हैं वो मंदिर के कक्ष में देर रहे थे, सो रहे थे। Right, you remember? It was a small temple room, but he could see. Of course, New Vrindavan was a farm. Devotees worked very, very hard. तो
मंदिर का छोटा ही था, प्रॉपर देख पा रहे थे, हालांकि जो न्यू वृंदावन का मंदिर है वो एक फार्म कम्युनिटी है। In those days, all the devotees everywhere in the world, they would work very, very hard, getting up 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning. और उस समय भक्त बहुत ही मेहनत करते थे, रोज सुबह 3 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे। It was, we say, drilled into our heads. No sleeping more than 6 hours or you're in Maya. और उस समय हमारे पूरे दिमाग में बसा हुआ था कि अगर 6 घंटे से ज्यादा सोए तो हम माया के अंदर हैं। Like I said last night, you don't go to Mangal Arti, you're in Maya. और अगर मंगल आरती में नहीं जा रहे तो माया में व्यक्ति। We never did these things. We never took naps. हमने कभी भी नैप नहीं लिया दिन में। During Srimad Bhagavatam class, we would sometimes take naps in the class. श्रीमद् भागवतम क्लास के समय हम लोग कई बार नैप ले लेते थे सुनते सुनते। Sometimes temple commander would have a spray bottle. और टेंपल कमांडर के पास पिचकारी होती थी जो हमारे ऊपर मारते थे। Like a gun, he would watch. He would not. जैसे कि बंदूक की तरह वो देखते थे कौन सा है उसके ऊपर पिचकारी मारते थे। There were some devotees, when they were giving class, they could fall asleep. कुछ लोग तो ऐसे होते थे जब वो व्यास आसन पे बैठ के क्लास देते थे वो वहीं सो जाते थे। Is it the fact or is it reality? Yes, no, it This is is true. the best. He just fall asleep as he's talking. वो क्लास देते थे ऐसे सो जाते थे। One time in the USA, just like yesterday, I went from Indore to Delhi, 1 hour flight. एक यूएसए के अंदर सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे जैसे कि दिल्ली से इंदौर का रास्ता मान लीजिए। So Prabhupada was traveling from New York to Detroit, 1 hour flight. तो प्रॉपर न्यूयॉर्क से डिट्रॉइट गए थे, 1 घंटे की जहाज की यात्रा थी। So many devotees, they also went on the flight to be with Srila Prabhupada. तो कई सारे भक्त श्रील प्रभुपाद के साथ हवाई यात्रा में गए। Big, big airplanes, 747. तो बहुत बड़े-बड़े हवाई जहाज थे। So Prabhupada was in the one row. Prabhupada always sat by the window. I would sit next to him. तो प्रभुपाद एक रो में थे, खिड़की की तरफ बैठे थे, उनके साथ बैठा हुआ था। Now this plane had 3 seats, 5 seats, 3 seats. So many seats were there. और इस जहाज में बहुत सारी सीटें थी, उसमें 3 सीटों का, 5 का और 3 का। So those devotees who knew Prabhupada was going to be in this aisle, they all sat in those seats and the rest of the seats in the plane. तो वो सारे भक्त जानते थे प्रभुपाद की खिड़की की तरफ बैठे और वो सब उसके पीछे बैठे हुए थे। So the plane takes off और प्लेन में उड़ान भरी after 10-20 minutes. और 10-20 मिनट बाद All the devotees in the row. जितने भी भक्त बैठे थे हमारे जहाज में वो सब सो गए, खराटे बने थे। We called it the devotee dive bombers. They could dive bombing, you know, dive bomb. तो उसको कहा जाता है कि डिवोटी डाइव बॉम्ब, मतलब डिवोटी का सर बम जैसे ऊपर से नीचे जाता है उसी तरह डिवोटी के सर ऊपर से नीचे जाता है। And Prabhupada sees them. He's right there across the road. They're all in this row. Prabhupada was looking at them, sleeping. और प्रभुपाद ने पीछे मुड़ के देखा सब सो रहे थे। And he turns to me. Why is everyone sleeping? और प्रभुपाद ने मेरे से पूछा सब सो क्यों रहे हैं? Like dead men. मृतक के समान। He said, no one on the airplane is sleeping except the devotees. प्रभुपाद ने बोला हमारे जहाज में भक्तों के अलावा कोई नहीं सो सकता। Why are they sleeping? I never say anything to him. You say anything, then he starts yelling at you. तो प्रभुपाद ने पूछा कि क्यों सो रहे हैं इस समय पर? मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलता तो प्रभुपाद मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते। I'm thinking, of course, these devotees, they're working so hard. They're coming, they're painting the temple, they're cleaning. So many things. Sometimes they're not sleeping at all at night. So they sit there and sleep. तो मेरे मन में चल रहा था कि ये भक्त लोग बहुत मेहनत करते हैं, मंदिर साफ करते हैं और अलग-अलग सेवाएं करते हैं। कई बार इतना होता है कि रात को भी अच्छे से नहीं सो पाते, तो कहीं पर भी बैठने का मौका मिलता है सो जाते हैं। But I don't say anything. पर मैंने कुछ कहा नहीं।
In Mayapur, one time he said, after lunch, Prabhupada would take a short nap, 15-minute, 20-minute nap. मायापुर के अंदर की बात की, मायापुर की घटना है, श्रील प्रभुपाद दोपहर में प्रसाद पाते थे, उसके बाद 15 मिनट का छोटा सा नैप लेते थे. And he took prasadam in his bedroom in Mayapur. अब प्रभुपाद अपने शयन कक्ष में ही लंच का प्रसाद लेते थे. So after he takes prasadam, I clear everything, and then I get his bed ready, so we can lie down. तो प्रभुपाद ने जब प्रसाद ग्रहण किया, उसके अंदर सारी सफाई करके प्रभुपाद का बिस्तर ठीक किया ताकि प्रभुपाद शयन कर पाए. So it's just him and I in the room. So I pull down the sheets, Prabhupada sits on the bed. अब मैंने अच्छे से चादर बिछाई, प्रभुपाद बिस्तर पर बैठे. He said, I hate sleep. तो प्रभुपाद ने बोला, मैं सोने से बहुत नफरत करता हूँ. He said, it's just a waste of time. ये समय की बर्बादी है. He said, I hate it, just wasting time. ये समय, मैं इसे नफरत करता हूँ, ये समय की बर्बादी है. And then the next minute he laid down in the bed, pulled the sheet over his head. और अगले क्षण प्रभुपाद लेट गए और उन्होंने चादर को अपने ऊपर ढक लिया. You could never understand Srila Prabhupada. हम कभी श्रील प्रभुपाद को नहीं समझ सकते. One time he said that to George Harrison. I hate sleeping, he said to George. एक बार श्रील प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को भी बोला कि मैं सोने से नफरत करता हूँ. And George says, me too. He said, I don't like to sleep. I can't get anything done. I have so much to do. I hate sleeping. और जॉर्ज हैरिसन ने बोला, मुझे भी बहुत नफरत है सोने से, क्योंकि अगर मैं सोता हूँ तो कुछ कर नहीं पाता, मैं भी बहुत नफरत करता हूँ. And Prabhupada's going, yes, yes, we hate sleep. और प्रभुपाद आगे बढ़ते रहते हैं, हाँ हमें सोने से नफरत करनी चाहिए. So no sleeping. तो कोई सोना नहीं है उससे. Our business is as much as possible. We try to render service to Srila Prabhupada. हमारा जो व्यापार है वो अधिक से अधिक कृष्ण की सेवा करनी है. So many sleeping pastimes are there. तो ऐसे कई सारे सोने की लीलाएं हैं प्रभु. But it's getting very late, so we'll stop here today. तो बहुत सारी लीलाएं हैं, यहीं पर रुकना चाहिए. प्रश्न. One question? One more question. मतलब कुछ माइक ट्रांसफर कर दीजिए. Thank you very much, Prabhu, Great. for the wonderful Hegelian class. Probably, like you were mentioning when you were mentioning the different fasts which you Prabhupada. So, were there some challenges also at that time with the devotees in the terms of like taking all these things already in a way and sometimes the Prabhupada was pushing. So just developing sometimes some grudge or grudgy feeling sometimes we develop when we serve senior devotees. And why so much? So but there were some challenges also like that while serving Srila Prabhupada. And if yes, then how did you deal with that in your service? तो प्रभु जी जैसे कि आप जब सेवा कर रहे थे तो फिर क्या आई एम ट्रांसलेटिंग इन हिंदी, जब आप सेवा कर रहे थे तो क्या उस समय कुछ संघर्ष भी आए थे? जैसे श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार भक्तों को पुश करते थे इतना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, तो कभी बार भक्तों को लगता था कि इतना क्या प्रभुपाद जी करते रहते. तो अगर ऐसे चैलेंजेस आते थे तो उन्होंने उन चुनौती से कैसे डील किया? His question is like Srila Prabhupada was pushing his disciples so much. So where there will be the grudges in the heart of the devotees, like we nowadays getting towards our senior when they push us, take us away from our comfort zone. So we feel grudge towards them. Yes. So do the Prabhupada disciples have the grudges towards Srila Prabhupada? And if yes, then how they deal with it? If they have, then how they resolve this and how they deal with it? How do you deal with being pushed? How to resolve this grudges? In the material world, natural tendency is everything going down. भौतिक जगत का एक नेचुरल एक प्राकृतिक सिद्धांत है, हर चीज नीचे की तरफ जाती है. I remember when my eldest son left home. मेरे को याद है जब मेरा बड़ा बेटा ने घर छोड़ा था. 18 years old he was. वो 18 वर्ष का था. And I understood his nature. और मैं उसका स्वभाव समझ पाया. And I said one thing to him. अब मैंने एक बात बोली. I said, if you're not going forwards, you're going backwards. अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे बढ़ जा रहे हो. There's no plateau in Krishna consciousness. We always have to be pushing forward. कृष्ण भावना भाव में कोई प्लेन धरातल नहीं है, या तो आगे बढ़ते हैं या पीछे जा रहे हैं. We always have to push ourselves
to do things. Prabhupada was pushing us like that. हम सबको अपने आप को आगे पुश करना होगा कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद हमें आगे धकेलते थे In every endeavor, हर प्रयास में। many times, especially in India, it would be the Matajis, they were cooking for Prabhupada. भारत वर्ष में कई बार प्रभुपाद के लिए माता जी कुकिंग करती थी Because they were qualified cooks. Qualified, they were qualified. वो क्वालिफाइड होती थी भोजन बनाने में। The rest of the world, I cooked for him. But in India, they could cook. भारत में स्त्रियां महिलाएं प्रभुपाद के लिए कुकिंग करती थी और बाकी पूरे संसार में मैं प्रभुपाद के लिए कुकिंग करता था। But then he would also chastise them. No, don't do like this, do like this. More flame, less flame. He would say things to them. और प्रभुपाद उनको भी डांटते थे और बोलते थे कि अग्नि ज्यादा होनी चाहिए, आंच गैस की आंच कम होनी चाहिए, ऐसे करो वैसे करो। But he explained, chastisement is not chastisement, it's to give you instructions so you can become better at whatever it is you're doing. तो प्रभुपाद समझाते थे कि जो उनकी डांट है वो डांट नहीं है, वो इसलिए है ताकि आप जो उनके आदेश है ताकि आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। But the chastisement always has to come from proper place. जो डांट है वो एक सही स्थान से आनी चाहिए। Not just because we enjoy lording it over someone. We actually want to help them out of love. डांट का उद्देश्य किसी के ऊपर प्रभुत्व जमाना नहीं होना चाहिए बल्कि उसके सुधार के लिए होनी चाहिए। Back when I joined 1971, 72, we would always hear Krishna consciousness based on love and trust. तो जब मैंने 1971 में ज्वाइन किया था तो हम सुनते थे कि कृष्ण भावना में प्रेम और विश्वास पर आधारित है। We didn't say trust and love. First there has to be love. You have to understand the person you're dealing with, he cares about you. तो इसमें हमने ये भी सुना कि ये विश्वास और प्रेम पर आधारित है, कि प्रेम और विश्वास पर आधारित है। हमें पहले व्यक्ति है वो हमसे प्रेम करता है। Then you can have your faith in them. Then you can trust them what they're doing. तो जब हमें पता होगा कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। So those in management, Prabhupada would always say, you do like me. तो जो प्रबंधक होते थे प्रभुपाद ने कहते थे तुम मेरे जैसा ही करो। It has to come from the proper place. Trying to serve. Managers serve the biggest servant of the devotees. तो ये प्रॉपर सही स्थान से आना चाहिए सेवा की भावना से और प्रबंधक जो होते थे वो बहुत बड़ी-बड़ी सेवाएं करते थे। Like I say, I just spent 6 days in Ujjain at the festival there. तो जैसे मैंने कल बताया था मैंने 6 दिन उज्जैन में जो उत्सव था उसमें व्यतीत किए। So all those devotees over the years, they've been trained by Bhakti Churu Maharaj. तो वहाँ जो भक्त थे वो भक्तिचार्य महाराज जी के द्वारा प्रशिक्षित थे। He spent significant time with Srila Prabhupada in the final years. भक्तिचार्य महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद के अंतिम वर्षों में बहुत ही अधिक समय व्यतीत किया। And he very much understood Prabhupada's mood, and he carried that mood. और वो प्रभुपाद के भाव को मूड को समझते थे और उन्होंने उसको साथ में लेके चले। So while I was there, I could see all the devotees, they had such wonderful service attitude. और जब मैं वहाँ रहा तो मैं देख पाया कि जो वहाँ के भक्त थे उनमें बहुत ही अच्छा सेवा भाव था। They took care of us just like we were Bhakti Churu Maharaj. वो हमारा ध्यान ऐसे रख रहे थे जैसे हम भक्तिचार्य महाराज हैं। Because we were his godbrothers. क्योंकि हम उनके गुरु भाई थे। So what's very important, the leadership has to show how to do things and why we're doing things. तो ये जो लीडर्स हैं उनको ध्यान देना कि सिखाएं कि क्या जरूरत है, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। We're not a mundane business. ये कोई भौतिक व्यापार नहीं है। We can't use mundane business model for how to make things happen. हम यहाँ पर भौतिक व्यापार के सिद्धांत को नहीं अप्लाई कर सकते। And when society gets bigger and bigger, very difficult to maintain that. और जिस तरह से हमारा जो संस्था है बड़ा होता जा रहा है इसको जो मेंटेन करना वो मुश्किल होता है। This is why Prabhupada wanted all the centers to be independently managed, not that there was big corporate style. तो श्रील प्रभुपाद इसलिए चाहते थे उनके हर केंद्र अपने आप में प्रबंधन करें अपना एक कॉर्पोरेट की तरह पूरे बड़े कॉर्पोरेट की तरह ना हो। Because everything is personal. ताकि हर चीज एक व्यक्तिगत हो पाए।
Once in New Dwarka, I was walking up the stairs behind Srila Prabhupada to his room. एक बार मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे के पीछे सीढ़ी पे चढ़ रहा था. He saw a bead bag hanging on a doorknob. अब प्रभुपाद ने देखा कि दरवाजे में मेरा बीड बैग टका हुआ था. He said, "Whose beads are crying there?" प्रभुपाद ने बोला ये किसकी माला रो रही है? It's personal. ये बहुत ही व्यक्तिगत है. Everything. हर कुछ. A few days later, going up the same set of stairs, he saw a plate of prasadam sitting on a table. और प्रभुपाद उसी सीढ़ियों पे कुछ दिन बाद भी जा रहे थे, वहाँ देखा एक प्रसाद की प्लेट रखी हुई है. You could see no one is there. Prasadam sitting there. प्रभुपाद ने देखा कि प्रसादम रखा हुआ है और कोई वहाँ पर है नहीं. He looked at me. He said, "Who has left that prasadam crying on the table?" प्रभुपाद ने प्रभु जी की तरफ देखा और कहा कि किस व्यक्ति ने ये प्रसाद को रोते हुए छोड़ दिया है घर पर. So this is Krishna consciousness. ये कृष्ण भावना है. We have to raise our consciousness. That's why it's called conscious. Krishna consciousness. All about elevating ourselves to the spiritual platform. तो कृष्ण भावना, ये कृष्ण भावना भावित हम सबको अपनी चेतना का विकास करना है ताकि हम आध्यात्मिक स्तर पर आ पाएं. See, everyone has same spirit soul, men, women, this country, that country, none of it matters. हर कोई आत्मा है और इस देश उस देश और से कोई संबंध नहीं है इसका. हर कोई जीवात्मा है. So it's a very serious process. ये बहुत ही गंभीर विधि है. Not a place just to come to, find a nice room, get a cell phone, eat nice prasadam and sleep like dead men. ये कोई ऐसा स्थान, अच्छा स्थान नहीं है जहाँ पर सिर्फ आप आए कमरे के लिए, मोबाइल फोन के लिए, सोने के लिए. So this is what we do. This is from Prabhupada. This is how he trained us in the beginning. इस तरह से प्रभुपाद ने हमें शुरुआती दौर में प्रशिक्षित किया. And hopefully this training goes on in the same way, passed down to parampara. This is what we do. और आशा करते हैं कि इसी तरह से प्रशिक्षण परंपरा के माध्यम से आगे चलता रहेगा. We don't need spray gun to wake everybody up. हमें वो बंदूक वाले कमांडर की जरूरत नहीं है जो सबको जगाता है. Okay, we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. So very much. Hare Very Krishna. much blessed by your such nice experiences with Prabhupada and such a nice and serious message also. Hare हम सब लोग प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण मंत्र से. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.